students, we have fundamental duties. We have studied about our fundamental rights, like what are the rights government had provided us for our betterment. Now it is the fundamental duties. Now after those rights, what is our duty for the government of India? That is to abide by the constitution and respect the ideals and institutions, to respect the national flag and national anthem, to realize and follow the essential ideals of secularism, democracy, and non violence, to preserve cultural and heritage, to protect the sovereignty, unity, and integrity, to safeguard public property, to defend the country even at the cost of your life, to protect natural resources, to avoid dowry, gambling, and other social evil, to strive towards excellence in respective spares activity of the individual. So these are some of the fundamental duties, like आप जानते होंगे जैसे हमें अपने देश के झंडे की इज्जत रखनी है, अगर नेशनल एंथम होता है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, वी लव आर नेशनल एंथम, देन वी शुड बिलीव इन नॉन वायलेंस, हमें बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, आपस में बैर नहीं करना है, देन वी हैव टू प्रोटेक्ट आर कल्चर एंड हेरिटेज, लाइक जो हमारे हमारे जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, लाइक वेयरिंग अ साड़ी, डूइंग नमस्ते, give respect to the elder, love to the siblings, younger one, एंड हेरिटेज मीन्स जो हमारे पुराने जैसे लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों की रक्षा करना, देन वी हैव टू सी लाइक कहते हैं ना देश के लिए जान भी दे देना, काइंड ऑफ दैट, यू हैव टू सेव गार्ड द लाइफ, यू नो, लाइक डिफेंड द कंट्री, वी शुड प्रोटेक्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, ठीक है, जैसे हमारे रिवर्स हैं, वी शुड प्रोटेक्ट दोज, राइट, वी शुड अवॉइड डाउरी, डाउरी एवरीबडी नोज, दहेज नहीं लेना है, जुआ नहीं खेलना है, किसी भी तरह का बुरा कुछ भी नहीं करना है जो कि सोसाइटी के लिए खराब हो. तो these all are our fundamental duties which we have to do, and this comprises of the main characteristics of the Constitution of India. Next example is next character is the secular state. That is, there is no official religion for Indian state. All individuals and communities have freedom to practice and propagate any religion, prohibit discrimination on the ground of religion, intervene matter, ensure equality, religious compensation, for example, untouchability. See, secular state का मतलब क्या है? Secular state means we all have secular, we all are equal. तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमें दूसरों से अलग करती हैं वो हमें नहीं करना है. वी आर फॉलोइंग आवर ओन रिलीजन, दैट इज मोर देन वेलकम. एवरीबडी हैज़ दिस फ्रीडम टू worship, everybody having a freedom to emphasize his or her religion, but that doesn't mean like you will be discriminate on the ground of religion. Means nobody can discriminate between any of the religion, like Hindu, Christian cannot do discrimination, Hindu, Muslims, these are the discrimination we should not do, since we all are human beings and we all are equal in the eye of law, in the eye of constitution. Like say for the example, earlier days we were having this thing untouchability, शूद्र लोगों को नहीं छूते थे, इस तरह की जो परंपराएं थी उनको हमने नकारा, अनटचेबिलिटी को हटाया. तो these all things comprises under the secular state. Another is independent judiciary. I told you we our country is having such constitution in which there is independence of judiciary. Means judiciary is having all the rights to make the law, to amend the law for the betterment of the country, for the betterment of the nation. But nobody except the legislature or except the executive body can defend the law, can change the law. Law can decide on what areas anybody should be punished and what are the benefit one should be get. So that is all about the independence of the judiciary. Another is we have a single citizenship, that is the Constitution of India recognize only single citizenship. In the United States there is a provision of dual citizenship, but in India we are a citizen of India only, not the respective state to which we belong. This
provision would help in promoting uniformity and integrity of the nation. We all say ना, हम एक हैं. So this is what the single citizenship is all about. India says we are a citizen of India. हम इस भारत के वासी हैं. That is, we are having a single citizenship. But कुछ कंट्रीज हैं, कुछ नेशन हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह, जो डुअल सिटीजनशिप भी देते हैं. बट अगर आप इंडियन हैं तो आप केवल एकमात्र इंडियन सिटीजन ही हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, सो दैट इट प्रमोट्स मोर ऑफ द यूनिटी. लोगों में एक मत होने की भावना और देश के प्रति प्यार को जगाने के लिए है ये. वी हैव